और आप आइंदा भी जुड़ते रहेंगे और अपने ज्ञान से पुलाप कराते रहेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र जी का, ठाकुर जी का, डॉक्टर बहुत बहुत ज्योति जी आभार का, सर। सभी को। अब हम आपका सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। 1329 आप लोगों का मार्गनिर्देशन, सहयोग इतना गजब है कि हम लोग चलते चलते 1329वीं वेबिनार पर चले आए। आदरणीय अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आदरणीय अर्पण जी, आदरणीय सुधाकर जी। इन सभी की प्रेरणा से स्वस्थ व्रत की एक सीरीज की शुरुआत हुई और उस स्वस्थ व्रत में हमारे अग्निहोत्री जी की मेन भूमिका है, सूत्रधार की भूमिका है। मैं अग्निहोत्री सर को बुलाऊं उसके पहले स्वागत प्रवचन के लिए आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, हरिओम। Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen, I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Secondary Preventive Measures. So in this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Professor Arpan A. Bhatt, Professor and Head, Department of Shastra Vitta and Yoga, Dean Planning of Development, ITRA, INI Ministry of Ayush from Jamnagar. Namaskar, sir, and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Professor P. Sudhakar Reddy, Professor and Head, Department of PG Study in Shastra Vitta, JSS Medical College, Mysore. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. S.M. Safdar Ashraf, Professor and Chairman, Department of Tahaffuzi wa Samaji Tip, Nodal Officer WHO NPSP, AKTC Hospital, Faculty of Unani Medicine, AMU from Aligarh. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Kamalesh Mahajan, Assistant Professor, Department of Shastra Vitta, ASS Government Aided Ayurved College, Nasik. Namaskar and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Vijaya Sri Satpathy, AMO, Department of Health and Family Welfare Department, Government of Orissa, Bhubaneswar. Welcome, madam. Next, I want to welcome Dr. Tejendra Singh, MD Scholar, Department of Shastra Vitta and Yoga, Uttaranchal Ayurvedic College from Dehradun. Namaskar and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to AYUSH Samriddhi webinar on secondary preventive measures. Thank you. Namaskar. Over to Pawan ji. हरिओम हरिओम। सभी वक्ताओं का हार्दिक स्वागत। मेरे पूर्व वेबिनार के भी जो मेंबर्स मौजूद हैं, अखिलेश भाई मेरे मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद। मैं अर्पण जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत अर्पण जी, बहुत बहुत मजा आ गया। ऐसे जुड़ते रहेंगे तो ऊर्जा बढ़ती रहेगी यार। हरिओम हरिओम। ऊर्जा की खदानें खोद ही रखी है ना। क्या बात है, क्या बात है। रेडियम रेडियम हो तुम, रेडियम से अपने आप ऊर्जा निकलती है। तो मैं प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर को, जो इस सीरीज के सूत्रधार हैं, सादर आमंत्रित करता हूं। वो अब मंच संभालें और वक्ताओं को भी आमंत्रित करें। और वो तो खुद स्वस्थ वृत्त के विद्वान है ही, हमारे गुरु हैं आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री।
धन्यवाद, नमस्कार प्रोफेसर पवन शर्मा जी, बहुत बहुत आपका आभार। इतना नहीं, ज्यादा नहीं उठाते हैं, हम सब एक हैं, कोई नहीं। वो खदान वाली बात तो अच्छी लगी मुझे कि भाई ऊर्जा की खदान से ही अपेक्षा की जा सकती है कि चलो और के रूप में सही, लेकिन मिलेगा तो। सबसे पहले तो हम आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मेरी खुशी आप लोगों ने इस करके बढ़ाई कि जो एक संकल्प मन में आया था 2 हफ्ते पहले कि स्वच्छ भारत की एक सीरीज शुरू की जाए, और वो आज हमें इस समय सक्रिय रूप से संचालित दिखलाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से हम जहाँ एक और आयुर्वेद परिवार पर गर्व करते हैं, उससे भी अधिक हमारे स्वस्थवित परिवार पर गर्व करने का आप लोगों ने मौका दिया। हमारी कॉल पर आप लोग जुड़ते हैं, जुड़े और इतना सहयोग दे रहे हैं, बहुत खुशी है कि कम से कम भारत स्तर पर जहाँ कहीं भी लोग हैं स्वास्थ्य से हमारे संपर्क में हैं, वो इतना हमको मान दिया और इतना अपना सहयोग दिया। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार है। अभी अशरफ साहब का मैसेज आया था, वो रमजान शुरू हो गए इसलिए शायद वो उनके लिए कन्वीनियंट टाइम नहीं है तो नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा उनका मैसेज आया। कोई नहीं, तो हमारे फिर भी हमारे आप स्वच्छवत के सभी मूर्धन्य विद्वानों के अलावा में प्रोफेसर गुरुदेव लक्ष्मीकांत द्विवेदी हम लोगों के साथ हैं, उनका आशीर्वचन मिलता है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आदरणीय विश्व मिश्रा शर्मा जी और डॉक्टर नेहा भट्ट जी हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो चर्चा का विषय रखा है हम लोगों ने, हमने जैसे कि भूमिका में बतलाया था कि हमारे यहाँ जो आरएवी के द्वारा जो सीएमई का जो सिलेबस है चॉकआउट, उसी के 24 जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको लेके हमें चलाते हैं। इसके अलावा भी हमें चाहेंगे जब भी आप लोग उनमें से अगली वेबिनार्स में जो वॉलंटरीली आगे बताते हैं तो उनको हम 3 लोगों को प्रायोरिटी पे ले लिया करेंगे, जिससे उनको पूरा मौका अपने विचार को रखने का मिल सके। तो उसी क्रम में आज जो हमने दूसरा जो एकेडमिक टॉपिक लिया है, वो एक्चुअली इसकी जो मेन हेडिंग वो है सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंटिव मेजर्स, लेकिन उसके अंतर्गत जो हमारा वो दिनचर्या उसका पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो आप लोग उस पूरे ही स्कोप पर अपने विद्वता के साथ में जहां से भी कवर करना चाहेंगे आपका स्वागत रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली टीचर्स के लिए भी जो पढ़ा रहे हैं, एमडी और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी एक मैसेज जाएगा। और क्योंकि आप लोग अपने अपनी फील्ड पे अपने टॉप पर हैं, अथॉरिटी प्रोफेसर हमारे रेड्डी साहब हैं, आप हो गए, अर्पण साहब हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। जब भी चाहे यूट्यूब पे देख लेंगे, जब भी चाहे रिकॉर्ड देख लेंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ में समय ना हम व्यतीत करते हुए आप सबका एक बार पुनः पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि निर्देश प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने मुझे दिए हैं, तो मैं सबसे पहले एक आरशी वचन के लिए आदरणीय प्रोफेसर अर्पण भट्ट जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस वेबिनार की शुरुआत भी करें, शुभारंभ करें और अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। और फिर से एक बार आप सब लोगों के दर्शन हो गए तो मैं बहुत धन्य हो गया। आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा साहब, आदरणीय अग्निहोत्री साहब, मेरे बड़े ही अजीज और लजीज दोस्त पवन कुमार जी, और हमारे साथ में जो और वक्तागण जुड़े हुए हैं। खैर, इसमें एक द्विवेदी साहब को मैं अभी तो यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, पर शायद वो जुड़े हैं या जुड़ेंगे। एक ठाकुर साहब भी जुड़े हुए हैं। तो सुधाकर जी, अशरफ जी, जिनका रमजान शुरू हो गया है, हमारे साथ आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। जुड़ते तो और मजा आ जाता, क्योंकि हमें थोड़ा यूनानी का भी कुछ समझने को सीखने को मिलता है इस सेकेंडरी प्रिवेंशन के संदर्भ में। फिर कमलेश जी हैं, मैडम सतपति हैं, और तेजेंद्र जी भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। तो उन सबका इस्तकबाल है, क्योंकि अशरफ जी नहीं है तो इस्तकबाल में ही कर लेता हूँ। तो आज आप भी करना पड़ेगा इस्तेकबाल। और वो थोड़ा सा अभी अलीगढ़ से लेके भी आए होंगे थोड़ा इस्तेकबाल, तो वो अभी बचा होगा तो कर लेंगे। हाँ, इस्तकबाल लेके भी आए हैं, तरन्नुम लेके भी आए हैं, इस्तकबाल भी लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब बोलना उसके विषय में तो है, पर मैं ये समझता हूं कि हमारा जो शास्त्र है, जिसका स्वरूप एक सर्वांगीण शास्त्र के स्वरूप में है, इस शास्त्र ने इस प्रकार से
जिसको हम एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं, उस प्रकार का अप्रोच कतई कभी रखा नहीं है। इसलिए जब वह आयुर्वेद के मोट्टो की बात करते हैं हम, या उसके हेतु की हम बात करते हैं, तो ये आता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की बात करते हैं तो यदि हम देखें कि स्वस्थ हम किसे कहेंगे, अब चरक महर्षि ने अपने हिसाब से बताया है कि सम मांस प्रमाणस्तु सम संहननो नरः वाली जो बात है, या महर्षि सुश्रुत जी ने जो बताया है समदोष समाग्निष्ट समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, जो सबको करीब करीब मुखपाठ है, जो आयुर्वेद से नहीं है, वो भी इस बात को काफी दोहराते हैं। और फिर हम यदि काश्यप जी की बात करते हैं कि जहां वो ऐसा बताते हैं कि भाई आपको यदि भूख लगती है, खाना जो पच जाता है शरीर सही तरीके से, सृष्ट विण मूत्र वातत्वम शरीरस्य लाघवम इत्यादि, तो यदि हम कुल मिला करके देखें तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बन जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो आज भी ये सवाल बन जाता है कि क्या हम वाकई में स्वस्थ हैं? क्यों? क्योंकि उस डेफिनेशन पर या उन क्राइटेरियन पर खरा उतरना काफी मुश्किल है। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे दोषों की अवस्थिति जो शरीर में है, मन में है, और जिस प्रकार से वो वातावरण से और मनोभावों से वो प्रेरित होती हैं, तो उस हिसाब से क्या समदोषत्व की स्थिति को हम कभी ला पाते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब भी जो गर्भावस्था में जब हमारा कंसेप्शन हुआ, उस वक्त जो दोष उत्कट रहा, उससे हमारी प्रकृति बनी। अब ये जो प्रकृति बनती है उसमें भी किसी ना किसी दोष को बढ़ा हुआ रहना या किसी ना किसी दोष को थोड़ा कम हुआ रहना, ये तो बनता ही है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारी पूरी जद्दोजहद तो ये जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है उसको बैलेंस करने में ही लगी रहेगी। जैसा मैंने इसकी शुरुआत जब हम कर रहे थे स्वस्थ वृत्त के आयाम की, उस दिन जो मैंने बोला था कि संक्षेप में यदि स्वस्थ हमें रहना है और स्वस्थ हमें कहना है किसी को, और किसी को गाइडलाइन देनी है कि भाई आप कैसे बिना रोग के रह पाओगे, स्वस्थ रह पाओगे कि नहीं ये सवाल है, पर बिना रोग के कैसे रह पाओगे, तो उसमें ये बात मैंने बताई थी उस वक्त भी, जो महर्षि चरक ने 4 लाइन बताई है। नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष्वसक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधम सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धि ज्ञानम तत्परता च योगे यस्यास्ति नानुपतन्ति रोगाः। तो ऐसे यदि हम जीवन जीते हैं तो रोग होने के हमारे स्कोप बहुत कम हो जाते हैं, या रोग नहीं हो सकते। हमारी जो इंटरनल फाइटिंग मैकेनिज्म है शरीर की वो अच्छी रहती है, और मन की अवस्थिति भी बहुत अच्छी रहती है यदि हमारी बुद्धि और मति और हमारा सत्व ये 3 पॉजिटिविटी में रहे तो। पर आज के युग की विटंबना ये है कि ऐसा रह पाना भी बहुत मुश्किल है। ये जो ग्रीड का दौर आ गया, ये जो कंपटीशन का दौर आ गया, ये जो दिखावे का दौर आ गया। अभी कुछ टाइम पहले ही नेहा जी बता रही थी कि भाई हम लोग वो एक दूसरे को देखने में और एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिराक में ही ऐसे हो जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि हम शायद उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, या नहीं पहुंच पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन आता है,
और फ्रस्ट्रेशन आता है तो सरल यूफोरिया लाने के चक्कर में हम नशे के आदी हो जाते हैं किसी ना किसी प्रकार के। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो क्या हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में सोचें? क्योंकि देखिए आधुनिक विज्ञान ने तो 4 लेवल्स पे इसको बांट दिया है कि भाई एक प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है, दूसरा प्राइमरी प्रिवेंशन है, फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है, फिर टर्शियरी प्रिवेंशन है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की जब हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वो प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद में आने वाली स्थिति है। प्रिमोर्डियल क्या है कि भाई व्यक्ति जब पैदा होता है उस वक्त से ही उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनना शुरू हो जाता है। एक्चुअली पैदा हो जाता है तब से नहीं, वो जब से कंसीव होता है तभी से ये प्रोसेस चालू हो जाती है। तो तब से यदि हम देखें तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हमें माता पिता का व्यवहार, गर्भाधान की पूरी प्रोसेस जो है, गर्भ संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है, गर्भिणीचर्या जो है, इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बच्चों को सारी अच्छी आदतें डालें, क्योंकि ज्यादातर प्रिमोर्डियल जो प्रिवेंशन है उसके बारे में जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, हालांकि हमारे शास्त्र ने ऐसी कोई बात अलग अलग नहीं बताई है कि ये प्रिमोर्डियल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि वहां तो क्लियरली कह दिया है कि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खवैगुण्याद् व्याधिस्तत्रोपजायते। बड़ा सिंपल सा है कि कुपित हुए दोष अपने शरीर में घूमते ही रहते हैं नितांत, और जब उनको कहीं पर ख वैगुण्य मिल जाता है, अब ख वैगुण्य क्यों मिलता है और किसको कहाँ कैसे मिलेगा, इसमें हमारी लाइफस्टाइल, खान पान, हमारा विचार आचार व्यवहार, ये सब उसमें रोल प्ले करता है अपना, कि ख वैगुण्य या स्रोतो वैगुण्य कहाँ पर कैसे डेवलप होगा। बीज भाग और बीज भागावयव की दृष्टि भी तो हम लेकर के आते हैं, खुदा ना खास्ता यदि है तो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। देखिए हेलो, ये जो कंटिन्यू करिए। बीज भाग और बीज भागावयव की दृष्टि की जो हम बात करते हैं, हमारे शास्त्र ने तो अतुल्य गोत्रीय विवाह की बात बताई है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाली कुछ ऐसी व्याधियां या कुछ ऐसे प्रॉब्लम या कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जिनके बारे में वो जानते थे, और आज के विज्ञान ने तो ये साबित कर दिया है कि भाई इस प्रकार का जो बीज भागावयव का दोष है वो करीब करीब 14 पीढ़ी तक जा सकता है। हमने 7 पीढ़ियों की बात की है, और इसलिए कहा है कि अतुल्य गोत्रीय विवाह करना है, और यदि सगोत्र में करना है तो मिनिमम 7 पीढ़ी का, 7 जनरेशन का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। तो ये जब हो सकता है तो चक्कर ये हो जाएगा कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो कुछ ऐसा तो अपने साथ लाएगा ही कि जिसके ऊपर जब वातावरण का परिवर्तन असर करेगा, खान पान का परिवर्तन असर करेगा, जब दिन के अलग अलग जो समय है, वयोहो रात्रि भुक्तानाम तेंतम इत्यादिगाक्रमात् की जो बात कही है, तो ये अपना अपना प्रभाव छोड़ेगा। उसके साथ में उसके विचार कैसे बनते हैं, यदि उसका सत्व विधेयात्मक है कि नहीं है, बुद्धि विशद है कि नहीं है, क्योंकि ये सारे संस्करण उसको पैदा होने के बाद में होना शुरू होंगे। कुछ जो है वो पहले से शुरू होंगे, कुछ जो है वो पूर्व से लेकर के आया है, क्योंकि हम तो कर्म के बंधन में भी मानने वाली प्रजा हैं, हमारा विज्ञान भी उसमें मानता है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जब आता है इस पिंड में, तो वो उसकी भी कुछ विटंबनाएं पिछले जन्म की भी साथ में होती है, और पिछले कितने जन्मों की होगी ये भी सवाल है।
तो बात यह है कि हमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रिवेंशन को और प्रिमोर्डियल भी उनको एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जितना कहा है वहां तक उसको ना छोड़ करके वास्तव में आयुर्वेद के संदर्भ में हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। क्योंकि जो किताबें हम देखते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, या जिन किताबों से हम पढ़ाते भी हैं, उन सब में इसका विस्तृत विवरण कहीं पर तो है ही नहीं। बिकॉज वी बिलीव इन दैट होलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ हमारे पास एक षट क्रिया काल का भी कंसेप्ट है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। और शास्त्र में सुश्रुत संहिता में जहां पर ये वर्णन मिलता है क्रियाकाल वाला, तो वहां पर ये बात भी बताई है कि भाई आपको पहला मौका कब है, जब संचय की अवस्था है। अब संचय की अवस्था तो फिजियोलॉजिकली एक दिन में कई बार आती है, पर ये संचय क्या व्याधि कर पाएगा, उतना प्रोमिनेंट है कि नहीं है, ये तय कौन करेगा। क्योंकि मुश्किल स्थिति एक तो ये है कि आज इंसान को अपने खुद के विषय में सोचने का समय नहीं है, ना तजुर्बा है, और ना ही उसको मालूम है कि उसको खुद के बारे में सोचना है तो सोचना क्या है। वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही सोचता है कि मेरा पैसा कहाँ डालने से कितना बढ़ेगा और मैं आगे बढ़ करके और पैसा कैसे कमाऊंगा। आज मेरे पास ये गाड़ी है तो कल दूसरी गाड़ी कब लूंगा, कैसी लूंगा, कितने में मिलेगी, लोन कौन सस्ता देता है, खाना आज शाम को मुझे घर में मिलेगा कि मुझे होटल जाना है और होटल में क्या खाना है। तो खुद के ऊपर सोच के जो एस्पेक्ट हैं वो काफी स्व केंद्रीय टाइप के एस्पेक्ट्स उसके हो गए हैं। और खास करके ये भी तो एक नशा है, यदि हम इसको नशा मानते हैं तो स्व केंद्रीकरण उसका इतना हो गया है कि वो उसी में रमा रहता है। तो पहले तो हमें व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि उसको अपने बारे में सोचना कैसे, अपने अंदर से जो उसको इंस्टिंक्ट्स मिल रहे हैं, जो उसको स्टिम्युलस मिल रहे हैं, उससे उसको क्या समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर स्वप्नों का इतना बड़ा विज्ञान है, आज या कल में शायद कुछ तो स्वप्न के ऊपर भी बात होने वाली थी या तो होने वाली है। कल हो गई, कल हो गई, कल हो हाँ, गई। तो स्वप्न का इतना बड़ा विज्ञान है, तो भाई स्वप्न आते हैं तो क्या आते हैं भाई, आज के युग के संदर्भ में हम उन स्वप्नों को किस प्रकार से doesn't want to hold hands. That's what it means. Then सर ऑल म्यूट किया जाए सर। नेहा जी अपना माइक डॉक्टर म्यूट रखिए। जी जी। तो हमें ये बताना पड़ेगा सबको। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात जब करते हैं, अच्छा दूसरी मजे की बात यह है कि चिकित्सक के पास या परामर्शक के पास कोई तब तक आता नहीं है जब तक उसको ऐसा लगता नहीं है कि वो खुद से या तो दोस्तों से या तो व्हाट्सएप के कोई उपायों से या नेट पर मिलने वाले कुछ रेमेडीज से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है, तब जाकर के वो किसी but you are वैद्य coming. के Tomorrow, fine. Fine. So डॉक्टर we meet नेहा, again. अपना माइक म्यूट कर लीजिए। Correct. Michael, sorry. आप भी म्यूट कर सकते हैं अग्निहोत्री सर। मैंने किया है, बार बार ऑन हो जाता, मैंने 2 बार किया था। We are not going somewhere. We like me to go. I've told you, na, tomorrow. यस, थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी सर। मैंने किया, मैंने कर दिया। अब मैं निकाल दूंगा तब गड़बड़ No हो one is जाएगी। forcing you. It's your willing. बुरा लगेगा निकालूंगा तो एडमिट नहीं करूंगा। उसमें क्या है कि उनका बच्चा उनको परेशान कर रहा है कहीं जाने, हाँ, क्यों बार बार मोबाइल छीन हमने रहा है, तो ये आवाज वेटिंग हो रही है। वेटिंग में डाल दिया, उनको वेटिंग में डाल दिया, अब नहीं आएगा। हाँ एडमिट मत कीजिएगा। बहुत अच्छा सर। ठीक है, वो ऐसा होता है कई बार, किस्मत होती है हर वक्ता की। हाँ ठीक है। किस्मत। तो हमें लोगों को इससे
आगाह करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बारे में समझना सीखे। तो मेरा तो विनम्र निवेदन ये है कि हम ये जितने भी टाइप के प्रिवेंशंस हैं, एक टर्शियरी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां तो व्याधि उस अवस्था पर आ जाती है कि वहां चिकित्सा ही सीधी करनी पड़ती है और कुछ आप कर नहीं सकते। ये सेकेंडरी तक आपके हाथ में ऐसे कुछ तो जुमले हैं बचे हुए कि जिसको यदि आपने सही कर लिए तो या तो आपको ज्यादा चिकित्सा परक काम नहीं करना पड़ेगा, व्यक्ति खुद से अपने आप को ठीक कर पाएगा, या ऐसे उपाय जो हैं जो कि ड्रास्टिक नहीं है वो आसानी से कर सकें। इसके बारे में भी यदि हम बात करें तो हमें ऐसा लगेगा, देखिए सुश्रुत संहिता में ये भी बात आती है संक्रामक रोगों के संदर्भ में। जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने कुछ ऐसे संक्रामक व्याधि बता दिए, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्यासनात् चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ज्वर कुष्ठम च शोषम च नेत्राभिष्यन्दमेव च संक्रामक रोगास्ते संक्रामन्ति नरान्नरम। तो इस प्रकार से जो समाज में एक व्यक्ति से फैल सकने वाले रोगों का विचार भी किया गया, पर उनको इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे ग्रुप में डिवाइड न करते हुए उन्होंने ये जनरल बताया, होलिस्टिक। आज जैसे हेट्रेड है, हेट्रेड एक व्याधि है। यदि हम मनोदोष के संदर्भ में लेकर के चलते हैं तो धारणीय वेग अधारणीय वेग के संदर्भ में यदि हम देख करके चलते हैं तो ये ऐसी बात है कि जो एक से दूसरे में फैलेगा। अब मैं किसी को हेट करूंगा तो कोई मुझे हेट करेगा, ये गिव एंड टेक फिनोमिनन हो जाती है। अब इसको इस इन्फेक्शन को आप कैसे हटाएंगे बताइए? इसके लिए कौन सा वैक्सीन लेकर के आएंगे? इसके लिए आप कौन सा क्वारंटाइन करेंगे? तो ये बात तो विधेयात्मक सत्व और विशुद्ध बुद्धि और सुख कर्म करने वाली मति से ही हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो वेगों वाला कंसेप्ट है वो भी सबको समझाना पड़ेगा, और उसके लिए शायद एक अलग से मुहिम चलानी पड़ेगी कि भाई रोगग्रस्त होने से पहले आप एक बार हम तक आए, रोगों की चिकित्सा के लिए हमारे पास आए। उसके लिए तो आजकल मिनिस्ट्री भी काफी काम कर रही है, काफी कुछ वो उसका प्रमोशन भी कर रही है, पर साथ साथ में ये भी प्रमोशन चलना चाहिए। हम जैसे जितने IRES जैसे जितने ग्रुप है या आयुष दर्पण है या ऐसे भी और बहुत सारे चल रहे हैं ग्रुप्स जो कि आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करने में लगे हुए हैं, उन सबको भी एक साथ एकजुट आकर के ये बात भी सब लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी कि सिर्फ रोग होने पर ही आयुर्वेद काम का नहीं है, रोग न हो उसके लिए भी आयुर्वेद काम का है, सही बच्चा हो उसके लिए भी आयुर्वेद काम का है, क्या खाएं क्या न खाएं ये सही तरीके से जानने के लिए भी आयुर्वेद काम का है। और यदि ये हम कर पाए तो हमारा जो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का मसला है वो अपने आप हल हो जाएगा। ज्यादातर तो टर्शियरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, यहाँ एक बात ये भी हमें समझनी आवश्यक है कि यदि हम कर्म के सिद्धांत में मानते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हम मान रहे हैं, तो हरेक को अपने किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, और जो कर्म का फल भुगतने की प्रक्रिया है उसको यदि इस जन्म में नहीं भुगता जाए तो आने वाले समय में उसको भुगतना होगा, क्योंकि जिसका जो कर्म जितना है उसको वही कर्म अपना भुगतना पड़ेगा। इसलिए कुछ कुछ व्याधि तो तब भी होंगे, यदि ऐसा नहीं होता तो आयुर्वेद का अवतरण ही नहीं होता। हम बात हजारों साल पहले की कर रहे हैं, आजकल की नहीं कर रहे हैं। तो ये व्याधि तो तब से हैं, तो व्याधि तो रहेंगे, पर यदि हमारी चेतना जागृत हो गई और यदि हम सही रास्ते पर निकल पड़े तब उससे होने वाली पीड़ा, जो विविधम दुखम आददाति वाली दुखम आददाति की बात है, वो दुख से हम निजात पा जाएंगे। मेरे हिसाब से शायद सेकेंडरी प्रिवेंशन के संदर्भ में हमें इस बात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि और भी बहुत सारे वक्ता मेरे बाद भी बोलने वाले हैं,
तो मैं बहुत ज्यादा इस विषय को आगे नहीं ले जाते हुए उन लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ कुछ, क्योंकि वरना ऐसा लगेगा पहले जो बोलता है ना वो सब कुछ बोल देता है, फिर बाद वाला क्या बोलेगा। तो यदि ज्यादा हो गया है तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विथ यू एंड ब्लेसिंग मी, एंड थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर अर्पण भट्ट जी। आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही, ये केवल आपका ये उद्बोधन ही नहीं था, ये तो पूरा की नोट एड्रेस हो गया मैं समझता हूँ इस विषय पर। और रही बात ये कि आपने ज्यादा बोल दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम आयुर्वेद में ये व्यवस्था है कि कोई कितना भी बोल दे फिर भी लिए वो अशेष नहीं होता है, वो तो बराबर बना रहता है और भी लोग बराबर बोलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत ही आपने फंडामेंटली क्लियर किया। मैंने इसीलिए प्रारंभ में कहा था ये जो आपका उद्बोधन है ये हम सबके लिए, टीचर्स के लिए, सीनियर फैकल्टीज के लिए, जूनियर फैकल्टीज के लिए, एमडी पीएचडी स्कॉलर्स के लिए ये बहुत बड़ी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्योंकि नए नए टर्म्स जो हमारे एनसीआईएसएम वालों ने प्रयोग कर दिया, सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स, टर्सरी प्रिवेंटिव मेजर्स, और आपने उसको संग और एड ऑन कर दिया प्राइमरी और प्रीमोडियल, तो ये कमाल की बातें होंगी। और इन सब का सार तो इतना ही हुआ कि हमको बहुत ही आराम से विधेयात्मक सत्य होना चाहिए, और विषयात्मक अगर बुद्धि हो गई तो ये सब पचड़े में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत आपका आभार। भाषा पर, शब्द पर आपका पूरा नियंत्रण है। आपने स्वाधिकार पे प्रस्तुति की, आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में अब हम अपने बहुत ही अच्छे मित्र और मैसूर से, हमारे जेएसएस कॉलेज से हैं, प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी को आमंत्रित करता हूं, जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की ही टीचिंग का एक अच्छा लंबा चौड़ा न केवल अनुभव है, बल्कि विभिन्न सरकारी समितियों और कमेटियों में उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है उससे भी एक अनुभव की फील्ड बढ़ जाती है। विषय के साथ में जो न्याय करना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम बच्चों को क्या समझाएं, बताएं, उसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी को आमंत्रित करता हूं। आई इनवाइट प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी फ्रॉम जेएसएस कॉलेज मैसूर to please join our dais and start your presentation on the topic the secondary preventive measures with a special reference to the its preventive aspect of Swasthwat as such, for our platform, for our teachers, for our PhD and MD scholars. Welcome you. Namaskar. नमस्कार सर। यदि अभिनय न हो तो मैं कुछ बात कहूँ। नमस्ते सुधाकर जी। नमस्ते सर, कैसे हो सर? अभिनय कैसे हो सकता है? यहाँ तो विनय विद्या ददाति विनयम है, यहाँ पर अभिनय नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे वक्तव्य में ये बात करनी थी कि हम जब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये 15 तारीख को वर्ल्ड स्लीप डे आ रहा है, सोने का दिन। जी तो जी। उसी के विषय को चलते हमने एक क्वालिटी ऑफ स्लीप विषयक एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करके सब बंधु भगिनियों में बांटी है जी। आगे इसके उस पे भी हमने रखा है। वो एक हमारा उपक्रम है ताकि हम जान सकें कि स्लीप क्वालिटी कैसी है लोगों की, और साथ ही साथ में उनकी दैनंदिन कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो वी वांट टू टेक अप अ बिग रिसर्च इन कमिंग डेज। तो यदि आप हम सबको सहायता करें तो ये हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप उस क्वेश्चन सर, आपका निवेदन नहीं, ये तो एक तरीके से हम लोगों के लिए सूचना हो गई। और 15 मार्च को हम लोग जो अपने त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत आने वाले स्लीप डे को भी जो मनाएंगे, और आप उसमें सादर आमंत्रित है। आज से ही आपका इनविटेशन है, यू विल बी देयर एंड विद योर कमेंट्स ओवर द वन ऑफ द त्रय उपस्तंभ एज स्लीप, निद्रा जिसको गए उसको लेके चलेंगे अच्छे से। और आप हमारे, यद्यपि संस्कृत श्रृंखला का भले ही विषय न हो, लेकिन स्लीप डे तो अपना इंटरनेशनल है ही है, तो उसमें भी हम अपने आप सभी आज के भी वक्ताओं को और सबको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ में आई अगेन इनवाइट प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी फॉर हिज प्रेजेंटेशन। थैंक अर्पण भट्ट सर जो पूछा है सर, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, यू। सबको भेजा है सर। ठीक है सर। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल द स्टालवर्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, पवन शर्मा सर जी, अग्निहोत्र सर जी, अर्पण भट्ट, कमलेश महाजन and Lakshmikant Dwivedi sir. After speaking Arpan Bhatt's part, nothing is there to speak, but still I would like to specifically talk on
secondary preventive measures, the topic which chosen by today Irish Agnew sir and Pankaj Sarji. I'm going to incorporate both modern and Ayurveda, how the secondary preventive measures can be understood by modern science and how Ayurveda can be incorporated. I would like to share my screen. Sure. Sir, is it visible? Just loading. It's here. Yeah, secondary preventive measures. Yeah, right. Great. Yes, sir. Yes. Hope it is visible. Now, let us see exactly what is prevention, because as the word secondary prevention is there, so I would like to say the root meaning of the prevention. That is action of stopping something happening or arising. The disease prevention means activities designed to protect patients and other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences. This is Mosby's Medical Dictionary edition 2019. Disease prevention, exactly what? Disease prevention covers measures not only to prevent the occurrence of the disease, such as risk factor reduction, but also arrest its progress and reduce its consequences once established. Disease prevention is the main objective of preventive medicine. Arpan Bhatt sir has spoken regarding the primordial, primary, etc., including secondary. So whenever we see the prevention means that may be at levels like primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. The most importantly, the prevention means the disease prevention only. So primordial, as already sir mentioned, following dinacharya, rucharya, sadvrita, acharasayana, etc. early in the age. That is, for example, a child who is in 10 years old. From that onwards, if they follow the diseases which are not at all, maybe not be imagined that they may get it, but it can be prevented. So as per the modern medicine, the primordial prevention is that if mother and father, they are obese, mother and father, they may be having the hypertension or diabetes mellitus, that can be prevented in the child by following, like not having the lack of physical exercise and taking more sweets, etc. So avoiding taking sweets more, etc. So the child is not at all got, but still they are taking preventive measures called primordial. So that means our Swasthavritta, if they follow since early childhood, the disease can be prevented. And primary prevention, now they are very near to get the diseases. That time, again following the Sadvrita, etc. What is secondary prevention exactly? Let us see now. The secondary prevention, it is defined as undertaking measures in the early stages of the disease or even much before the development of permanent pathology in the individual. So as per the modern science, the secondary prevention starts when disease already manifested. That is exactly. So before manifest disease, we are taking the primordial and primary prevention. But when disease pathology started, still we can prevent further progress and also can prevent consequences in the secondary prevention. The intervention in this level is early diagnosis and early treatment. As per the modern science, I am telling early diagnosis and early treatment. Early diagnosis can be achieved by screening test and case finding program. Here, the Shat Kriya Kala knowledge will be applied to screen the patient, whether he is going to develop the disease or is in disease in early stage, like Prasaravastha, Sanchaya Prasaravastha, Prakopa Prasaravastha. So the Shat Kriya Kala knowledge can be applied in the secondary prevention to prevent further disease progress. In this, early diagnosis and early treatment helps in the following ways. So as per the modern science, they say that this diagnose early so that you can start early treatment. So the prevention of complication can be prevented, the further progress can be prevented.
So it helps in recovery from the disease, reduces the duration of illness in the individual, minimizing the sufferings, prevents the development of complications, prevents further spread of the disease in the community. So this is exactly the secondary prevention as per modern science. Now, early diagnosis and early treatment is like a stamping the spark rather than calling fire brigade to put out the fire. So stamping the spark rather than calling fire brigade to put out the fire. So before calling them only, you just stamp it. That is called secondary prevention. Already fire occurred, but there you just stop before calling the fire brigade. But there are some drawbacks are there. What are drawback? Drawback of secondary prevention is that patient has already subjected to mental stress and physical pain, loss of production, because already he started the manifestation of the disease. With that only, some patients may be mentally stressed, physical pain will be there, loss of production will be there. So it is an imperfect tool in the control of transmission of the disease. It is more expensive and less effective than primary prevention and primordial prevention as per the modern medical science. Now, there are some modes of interventions are there, if you see. So the intervention is defined as any attempt to intervene or to interrupt the usual sequence in the development of disease in a man, like pre-pathogen phase and pathogen phase. That can be correlated with the Chaya, Prakopa, Prasara, Sthana, Samsa, etc. So in the sequence, the sequence can be interrupted, the sequence can be intervened. This may be provision of treatment, number one, education, health, and social support. There are 5 modes of intervention in the corresponding to natural history of the disease. What is natural history of the disease? The disease starting in the human being, and if you are not taking any preventive measures, if you are not treating the disease, what is the fate of the disease? The disease may be recovered by person's immunity. The disease may be giving the some complications, or else the disease may kill the person. This is a natural history of the disease. So in this natural disease, one where the disease can be prevented. So there are 5 interventions are there. Health promotion by following Rucharya, Dinacharya, Sadvrta, etc. Specific protection. They have specific protection like BCG vaccination, some nutrition deficiency disorders specifically. To prevent the BCG, they have only tuberculosis, BCG vaccination specific protection, like vaccines, like other, like vitamin A deficiency, only we have to supplement the vitamin A only, like a specific protection. And third one, early diagnosis and early treatment. That is in secondary prevention. And other one, disability limitation, rehabilitation comes under tertiary. We are not going to discuss the tertiary. Now, early diagnosis, early treatment. This helps the recovery from disease, reducing the treatment duration, minimizing suffering, etc. as I already mentioned. Okay, and this is a true sense secondary prevention. It's nothing but early diagnosis and early treatment. In Ayurveda, we will get the reference to this aspect. So all following Dinacharya, Rucharya, Sadvrta, Acharasayana, etc. in the by healthy individual is primordial and primary prevention. But secondary prevention, as per modern science, says that diagnose early and treat early. With this meaning in Ayurveda, we'll get one reference. Tasmat prageva rogebhyo rogeshu taraneshva Besajaihi pratikurveta ya ichet sukamatmanaha. One should treat the disease in initial stages with proper medication to get proper relief. So beautifully mentioned by Charaka Samhita is suitable for the secondary prevention as per the modern medical science. And other things following Dinacharya, Rucharya or Swasthvrta by healthy person is primary and primordial prevention. Once if you get the disease in the initial stage, Taraneshva, in the initial stage, you diagnose it and treat it. So this is called secondary prevention, where Dinacharya process also can be adopted, like Udvartana, Abhyanga, Vyayama, according to disease condition in initial stages. That is called secondary prevention according to Ayurveda. Now, let us see one example. As per modern only, later I will discuss within few minutes
diabetes mellitus or prameha as per Ayurveda. The goal of secondary prevention is to detect and control high blood pressure in affected individual. So we diagnose the hypertension. Now, what is secondary prevention? To detect and control high blood pressure in affected individual. So that means early case detection. Early detection is a major health problem that we know, because nobody will come to you with an healthy person. But whenever they get any giddiness or headache, etc., they will come. But in a age group of 25 or 35 to 45 years age group, they are healthy. They are following all things. See, again, if you do screening, then definitely there will be high BP. So the screening method is very important to detect early disease. And treatment, when you detect early, you can start treatment, or you can follow Sadvrutta or other Acharasayana, etc. This also. And patient complaints also one more. So prevention diabetes, just I would like to say that here, primordial prevention, as we know, it comprises the nutritious food and physical exercise, nothing but proper ahara sevana and vyayama. As a best mode of primordial prevention in Ayurveda, if we follow dinacharya properly, rucharya properly, especially Ritu Shodhana, periodical Shodhana, Ratricharya, Acharasayana, Satmya, Asatmya, Satmya Sevana, Asatmya Asevana, and Sadhutta following. This is a primordial prevention for diabetes. If you follow these things in an early age and early childhood, then definitely the disease can be prevented. And as a primary prevention, again, at the age of 25, 30 years onwards, sedentary lifestyle, that reduce it, overnutrition reduce it, obesity control, alcohol intake control, oral content control, definitely you may not be going to get the disease of diabetes as a primary prevention. Like smoking, the reduction of the smoking, high blood pressure, elevated cholesterol, high triglyceride levels in an individual. If you find this one, if we control, we can prevent the diabetes. And in Ayurveda, they mentioned beautifully, they mentioned Asya Sukha, Swapna Sukha, Dadhini, Mamsarasa, Paya, Navannapana, Udavaikrutancha, Kafakara, Nidana. So this is the Nidana for Prameha. As a primary prevention, what we should do? Avoid these Nidanas. One can prevent the Prameha. That's called primary prevention. You just avoid these things. Definitely, you can prevent the primary prevention. And the secondary prevention, once you started symptoms of the Prameha, then what we should do? To maintain the normal blood glucose level, to maintain the ideal body weight by Ayurveda, and treatment is based on the diet alone can be, if you detected early, but diet can alone, ahara can alone, or patya can alone control the disease. Diet and oral anti-diabetics at Ayurveda or modern, and diet and insulin if they're possible. Okay, so in secondary prevention, again, we can say that proper management is most important to prevent the complications. The interventions are lifestyle intervention by following the Sadvrutta, Sastarutta, etc. And also modern medicines, you can take it, or Ayurvedic medicine. But here, the best mode of secondary prevention in Prameha is Dhanavan Pramehi, Asavaha Payayet, Chaudrani Panabhojanat, Vyayama, Niyuddha, Krida, Gaja, Turanga, Ratha, Padati, Charya. So these things are as a secondary prevention. The complications of Prameha can be prevented, Prameha Pidaka can be prevented, Prameha can be controlled. Adhanavan, the person who is not able to, that means not having much money, what you should do? Padatrana. So just walk without your chappal. Yojana Shatamadikam va gachati. Bishakshasi, that means like a beggar. You go on beg, and that means it is a walking only. And also less food. That's called Munirma Samyatam. So how the Munis, Rishis will take controlled food or little food. That way the food can be, the intake of food can be reduced. And Krisham tu Satatam Rakshet. That means always the person of the Pramehi, the Krishatva can be prevented. The Krishatva should not be there in the
prameha. So these are the secondary prevention. But already you got prameha, but to prevent the further complication, this Dhanavan pramehi, Adhanavan pramehi, whatever Susacharya mentioned, if we follow, the complications of the disease can be prevented, the disease can be controlled. And to conclude, I can say that secondary prevention is in the true sense management of diseases to prevent further complications. Very, very important. It includes lifestyle modification like following Sadvritta, Swastavritta, Acharans, etc. Dietary therapy, Pathya, which are mentioned in the as per the disease condition, and appropriate medication. In that disease condition, whatever medication mentioned, you can follow. This is called secondary prevention as per my view, according to Ayurveda and modern. Thank you very much. I may be not correct, maybe not correct, maybe suitable. If anything is there, can discuss. So this is my view regarding secondary preventive measures. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Reddy ji. Thank you so much. It's not a matter of correct or incorrect. The fact is, this is the vision of a professor. It's a vision that how you consider, how you sweep into the matter and see what is what, as far as the topic is concerned. Because things are there, syllabus is there, and thinkers are there. So whatever is uttered by the modern medicine, to put it and bring it into the terminology of our Ayurvedic text, which is already been written, how we can make a correlation or coordination, it is important. This is being done by you. So as far as the modern medicine is concerned, they are talking about the disease. Then only it is known as the secondary preventive measures. And you took that point. But at the same time, when we are dealing with the primordial, it itself reveals us so many things, especially regarding the Atulya Gotriya marriages and all that. From there, we can take the chance to better at the level of seed, mane bij or shukra, bij bhag, and bijabhavaya. This makes a more sound to approach with the preventive measures, confining to a person who is going to come on earth right from the womb of the mother. So right from the conception itself, it can be approached. When the disease is precipitated, then we are all there to manage in any way, but early diagnosis, better treatment, best results. This is also again a line of formula for that. Dr. Mahajan, so thank you so much, Professor Reddy ji, and we do hope that you will be always with us as you are. Now I am seeing Dr. Mahajan is very much here. Good evening, sir. Yes, what I can take a favor from you, because being a lady, if Dr. Vijayashri Satpathy from Odisha, Yes, sir. you might be having a little daughter with, if you permit, I may call Dr. Vijayashri Satpathy for her presentation, so that we will be discussing after him. So, yes, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank Pranam, you, sir. thank you. Ji, sir. I invite you to please proceed. You are comfortable to continue with your stuff, with your PPT? Yes, sir. I will try to say. Sir, अगर नहीं होता है तो सर कोई बात नहीं, तो आप नहीं, मैंने प्रोफेसर पवन शर्मा जी से कह दिया था, लेकिन चूंकि अब संचालन की जिम्मेदारी मेरे को दी हुई है, he is listening all that. If you start with, if there any problem, I may again request, or you can give some request in the chat box also. Okay. Yes, sir, sir. Okay, good. सर शेयर हो पा रहे स्लाइड? आ गया, गुड, फाइन, ग्रेट. Yes, sir. You are doing Thank you, sir. co-host. Yes, sir. Secondary preventive measures. Yeah. Yes, sir. 1 minute, sir. Meanwhile, I can introduce you for the rest of our guest speakers and our platform dignitaries. Dr. Vijayashri Satpathy, she is MD from BHU Swasthavath, and she is posted as the Ayurvedic medical officer there in Odisha, Puri, and she is always cooperating us as far as the academy is concerned
for her presentation, except a few ailment or some unfavorable conditions. So she is very much here, and I invite her because it's already 10. So we have to complete it within next 20 minutes, so that our third webinar is also there to be conducted on No jewels. problem, sir. No problem. Time can be Yes sir, yes extended. Okay. Thank you, sir. Thank you. So you please start, Dr. Vijay. You can यस start सर, now. यस सर। हाँ, यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे गुरुवरों को मेरा प्रणाम। आप लोगों के सामने मेरा प्रेजेंटेशन देना धृष्टता होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपनी नहीं बात होगा। रख पाऊँ। जी सर। जो मेडिसिन के गोल्स हैं, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। तो ये कैसे हो पाएगा? बाय सक्सेसफुल प्रिवेंशन। और सक्सेसफुल प्रिवेंशन कैसे हो पाएगा? बाय नॉलेज ऑफ कॉज। उसका कॉज क्या है वो जानने के बाद, उसका ट्रांसमिशन का डायनामिक्स क्या है, उसके मोड्स क्या है वो जानने के बाद, जो रिस्क ग्रुप है एंड उसके रिस्क फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, एंड उसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, सारे मेजर्स अवेलेबिलिटी कराने के बाद, और ये सब के बाद उस सब का प्रॉपर एप्लीकेशन हो पा रहा है, ये देखना एक सक्सेसफुल प्रिवेंशन के अंदर आता है। जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है वो प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम इंटरवेंशन में क्या कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि जैसे माता पिता हो गए बच्चे के जन्म से पहले, तो उनको बच्चा कैसा होगा उसके लिए जो हम एजुकेशन दे रहे हैं कि आप अपना खान पान, जीवन शैली, दिनचर्या, ये सब को सही करने से आपका बच्चा सही होगा। तो वहां से शुरू होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन बाय इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, एंड जो हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी प्रिवेंशन बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो आगे जाके अगर वो और भी डेवलप करता है तो वहां पे हम टर्शियरी प्रिवेंशन करते हैं टू डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसका जो मेन पर्पस है टू हल्ट द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। तो वहां पे फेज ऑफ डिजीज है अर्ली स्टेज, तो इसीलिए हमारा एम रहेगा टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज, एंड इसमें एक्शन हम क्या लेंगे? अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन टू कंट्रोल द डिजीज एंड मिनिमाइज डिसेबिलिटी। तो इसमें टारगेट हमारा क्या रहेगा कि अर्ली जितनी जल्दी हो पाए वो डायग्नोस हो जाए एंड उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो उसको हम आयुर्वेद में क्रियाकाल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि क्रियाकाल दो प्रकार के हैं, ऋतु क्रियाकाल और एक व्याधि क्रियाकाल, यानी ऋतु अनुसार जो वातादि दोष का प्रकोप, प्रेशर होता है, एक वो है, और एक दूसरा है, सॉरी सर, और एक दूसरा है व्याधि क्रियाकाल यानी षट क्रियाकाल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? संचय, आपकी प्रकोप, आवाज आनी प्रेशर, बंद हुई है। स्थान संचय यानी प्रागरूप। यस सर, सर am I audible? हेलो। हाँ ठीक है, आगे। यस सर। संचय, प्रकोप, प्रेशर, स्थान संचय यानी जो प्रागरूप है उसका, व्यक्ति यानी जो रूप है उसका, एंड वेदर यानी उपद्रव। तो जो क्रियाकाल है उसको अगर हम उसको चिकित्सा आवश्यक भी कहा जाता है, क्रियाकाल इति चिकित्सा आवश्यक। तो क्रिया क्या है? जो भी हम चिकित्सा यानी जो भी भेषज इन टर्म्स ऑफ औषध, आहार एंड विहार जो भी हम अप्लाई करेंगे वो सारे उस क्रिया में आ जाते हैं। और काल क्या है? जो अवसर, जो स्टेजेस हैं उसके अंदर हम ये सारे जो भेषज को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि क्रियाकाल इति चिकित्सा आवश्यक। तो यही प्रॉपर टाइम होता है डिजीज को प्रिवेंट करने का। तो जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, उसको हम अगर देखेंगे तो यह आयदर स्थान संचय या फिर व्यक्त अवस्था में ही हम उसका सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अतर्द व्याधि दर्शन होगा, तो व्याधि में जैसे कि सोप, अब्रुद, ग्रंथि, विद्धि, विसर्प प्रभृति ये सब आ जाते हैं, और उसका लक्षण प्रव्यक्त लक्षण हो जाता है, ज्वर, अतिसार प्रभृति उसके लक्षण प्रव्यक्त हो जाते हैं। तो इस स्टेज में हमको क्या करना है? एक तो डिजीज का जो प्रोग्रेस है उसको कंट्रोल करना है, और यानी फर्दर अटैक को रोकना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्त अवस्था है वो जिस इंडिविजुअल में व्यक्त अवस्था आ गया है उसके व्यक्त अवस्था के साथ साथ जो पहले के जो अवस्थाएं हैं जैसे कि संचय, प्रकोप, प्रसर एवं स्थान संचय, वो सारे एट ए टाइम चलते रहते हैं।
तो उसके साथ साथ व्यक्तावस्था भी आते हैं। तो इसलिए हम इस अवस्था में हमको जितने भी इंटरवेंशन से लाइक हेल्थ प्रमोशन से लेके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो सारे इस अवस्था में हमको करना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, स्पेसिफिकली हेल्थ प्रमोशन में दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन, जिसको स्पेसिफाई किए हैं भाप्रकाश जी ने। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या जथोदितम आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति अन्यथा। तो स्वस्थ रहने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए दिनचर्या निशाचर्या एंड ऋतुचर्या का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है। उसके बाद सद्व्रत पालन एंड हित आहार सेवन, जिसका महर्षि चरक ने बताया है, नैरो हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषो असक्त दाता सम सत्यपर क्षमाबान आप्तोपसेवी भवति अरग। तो ये जो लोग हैं हित आहार विहार सेवन से एवं सद्व्रत पालन से, उससे क्या होगा, वो अ, अरोग रहेंगे, यानी उनको कोई रोग ग्रसित नहीं कर पाएगा। उसके बाद न बेग धारण, ये हम हेल्थ प्रमोशन के लिए बता सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए जो ऋतु क्रियाकाल के हिसाब से जो ऋतु अनुसार दोषों का प्रकोप, संचय प्रकोप एवं प्रशम हो रहा है, उस अवस्था में ऋतु अनुसार शोधन करना चाहिए एवं यौगिक क्रिया में सटकर्म एवं अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। उसके बाद आता है अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही हम काउंट करेंगे। आज मैंने बताया कि जो रक्तावस्था तक जब व्यक्ति आ गया है, उसके शरीर में सारे संचय प्रकोप प्रसव एवं स्थान संचय सारे अवस्था चल रहे हैं। तो इसीलिए पहले हम हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के, उसके बाद जो लक्षण आ रहा है उसका अर्ली डायग्नोसिस करके हम आगे उसका चिकित्सा करेंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस में आयुर्वेद में जैसे बताया है कि रोग एंड रोगी परीक्षा, तो रोगी परीक्षा के लिए आचार्य चरक ने भी बताया कि परीक्षा कारिण कुशला भवंती। और आगे जाके बताते हैं कि भिषजा प्राक परीक्षा एवं विकारणम शोलक्षणम पश्चात कर्म समारंभ कार्य साधिशु धिम्मता। तो पहले रोगों का विकार का परीक्षा करके उसके बाद ही चिकित्सा कर्म आरंभ करना चाहिए। तो रोग परीक्षा बाय निदान पंचक एवं षड्विध जो परीक्षा है, श्रोत स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण एवं स्पर्शन परीक्षा से, एवं रोगी परीक्षा बाय त्रिविध एंड अष्टविध परीक्षा, जिसमें कि नाड़ी मल मूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श प्रकृति, ये सब परीक्षा करके हमें पता चलेगा कि व्याधि किस अवस्था में है। उसके बाद इसका चिकित्सा, सबसे पहला जो चिकित्सा आता है एक विधि चिकित्सा में, जो निदान परिवर्जन, तो जो उसका निदान होगा उसका सबसे पहले हम परिवर्जन करवाएंगे। त्रिविध चिकित्सा में जैसे शीतोपचार उष्णोपचार, जो उष्ण व्याधि है उसमें शीतोपचार, एवं शीत व्याधि है यानी कफज व्याधि है उसमें उष्णोपचार, और द्रव्यभूत अद्रव्यभूत चिकित्सा, शोधन और सामान्य चिकित्सा, वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद त्रिविध चिकित्सा, जिसमें दैव व्यापाश्रय इंक्लूड है, जिसमें मणि मंगल पूजा होम व्रत ये सब का हम पालन करेंगे। युक्ति व्यापाश्रय में भेषज सेवन और पंचकर्म का प्रयोग करवा सकते हैं। सत्व वजाय यानी मानस चिकित्सा में हम मन का चिकित्सा, जिसमें भागवत ने बताया है कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनौषध परम, तो ये सब मन के परम औषध है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञान। और आचार्य चरक ने बताया है कि मानस ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी, तो इसका हम उपयोग करेंगे। उसके बाद त्रिविध चिकित्सा में दोष के स्थिति अनुसार लंघन पाचन दोषावशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अंत परिमार्जन बहिपरिमार्जन शस्त्र परिनिधान, रोग एवं रोगी की परीक्षा करके उसके दोष के स्थिति एवं रोग के स्थिति के हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके आगे हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए रसायन सेवन करवा सकते हैं, जिसमें कि आचार रसायन है एंड नैमितिक रसायन है। नैमितिक रसायन जो रोग के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, जैसे भी कि चक्षुगत विकार में त्रिफला शतावरी यष्टि मधु, हृदय रोग में अर्जुन सालपन्नी पुष्करमूल गुगुलू, एवं त्वगत विकार में बाकुची गंधक भल्लातक तुबरक और विड़ंग, और जो संधिगत विकार है उसमें सल्लकी रसोना अमृत भल्लातक, और जो प्रमेह है उसमें शिलाजतु आमलकी हरिद्रा, एवं आने यानी पांडु में लौह का प्रयोग कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में रक्तगतवात में रसोन सर्पगंधा बला रासना एवं मध्य रसायन का सारे प्रयोग कर सकते हैं। हाइपोटेंशन में कुपिलु एंड कस्तूरी का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा यानी तमक श्वास में हम हरिद्रा अगस्ती एंड रासना का प्रयोग कर सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है लिपिड डिजॉर्डर से, उसमें हम गुगुलू एंड हरितक का प्रयोग कर सकते हैं। एलर्जिक कंडीशंस में हरिद्रा, एंड मेंटल कंडीशन यानी जो मानसिक विकार है उसमें हम ब्राह्मी ज्योतिषमती जैसे द्रव्यों का रसायन के नैमितिक रसायन के रूप में सेवन करवा सकते हैं।
तो जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो उस हिसाब से जो स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण यानी प्रिवेंशन आयुर्वेद में सबसे पहले उसको इम्फासाइज किया गया है। उसके हिसाब से संहिताज में वो दिनचर्या ऋतुचर्या से लेकर सारी चीजें बताई गई है, जिसको फॉलो करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इतना ही सर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। आपने बहुत फास्ट और बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में पूरा बात कही, बहुत प्रेजेंटेशन दिया, और लास्ट में जो स्लाइड दिखा दिया उसके लिए कुछ और भी सोचने का मिल गया। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो क्यों ना हम ये माने कि इन द वूम इटसेल्फ द fetus we is also स्वस्थ, and we have to maintain the health of that fetus also. For that, the whole of the Garbhini Paricharya is equally important to produce the progeny in a healthy form, which should not contain any congenital defect, and good health, weight, and everything. That too on a completion of full duration, and in a form of FTND, I should say. So wonderful. Your cooperation is always indebted by me. I feel that like that. और आपने बहुत अच्छा थैंक यू प्रेजेंटेशन सर। दिया, बहुत फास्ट चले बिल्कुल। लेकिन ये आपने इससे पहले जुड़े रहे होंगे, तो हमारे जो आदरणीय मूर्धन विद्वानों ने चर्चा की, उससे आपको जो गाइडलाइंस मिली, आपने देखा कि क्वालिटी कितना फर्क पड़ता है। आप पढ़ाते हैं, अब वो हैं जिन्होंने आप जैसे लोगों को पढ़ा के बना दिया है। तो एक जो डिफरेंस था, उससे आपको उधर सीखने को भी मिला। और वही श्लोक है, वही शास्त्र है, वही सब है, लेकिन अच्छा रहा। बहुत थैंक यू सो मच। और अब हम बुलाना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र डॉक्टर कमलेश महाजन जी को, जो नासिक से जुड़ते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा प्लेटफॉर्म इतना रिच लोगों से जुड़ा हुआ है। संस्कृत के जो आचार्य लोग हैं, जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, और एक ही टॉपिक है और सबके विचार आ रहे हैं। सबके विचारों में एक अलग सी पकड़, एक अलग सी दिशा निर्देश, एक लाइट, एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर कमलेश महाजन जी को। आप अपनी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन देने का कृपा करें। नमस्कार। Pranam sir, good evening all of you. Am I audible sir? Yeah, sure. Yeah. I am very blessed sir, today in the presence of Honorable Stalwart of the Swasthruta, Honorable Vinesh sir, Honorable Pavan sir, Honorable Arpan Bhatt sir, Honorable Reddy sir, and all the other respected dignitaries present here. Can sir please, may I host now, co-host now, so I can share my... Sure, you can, yes. Dr. Vijayashri, you can stop sharing the screen. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Is it visible, sir? Just loading. Not. This is the slide, our invitation slide only. Okay. Yes, you proceed the second one, then it will start. Yeah. You click on the second, that will be your first slide. Yes. Yeah, right. Okay. So with your introduction, Professor Vishwabhashar Sharma ji already started giving your invitation. You are Dr. Kamlesh Mahajan ji, Assistant Professor, Department of Sanskrit, ASS, Government Aided Ayurvedic College at Nasik. So please continue. Thank you, sir, for my communications. Just I want to say today's all the brainstorming lectures, after listening by respect all the dignitaries here, I would like to say only one thing, that why not we take initiative measures for starting the national geriatric preventive health programs, because it's a need of ours nowadays. And I think so, depending, considering the SWOT analysis, so strength, weakness, opportunities, and threat, basic holistic health principles, what you are mentioned in Ayurveda, because the basic principle of Ayurveda is it's a art of living science. So Ayurveda is the art of living science, and Sanshiptaha Kriya Yogi Nidan Parivartanam. So all types of preventive measures, primary prevention, secondary primordial prevention, just said by the respected stalwart of the our society, Swasthruta society. So Ayush healthcare need of ours, comorbidity factor, prevention in geriatrics. In the pandemic period, Minister of Ayush declared the comorbidity factors which are responsible for the high risk factor for the corona. So Asian Community News, it's Ayush system as an important factor in bringing down the mortality rate in COVID-19 patient in India, specifically in the geriatric stage, and report that World Health Organization, BRICS, and Europe are set to join. So it's a
innovative taken by the Minister of Ayush by implementation of various remedies, Ayush Quad or immunomodulator, rejuvenation, and protocol, COVID protocol. It's nothing but I think so. It's a secondary, primary, whatever. The thing is that the clubbing of all the measures and mentioned that Shidete Tas Shariram. So in the geriatric stage is the natural phenomenon. Just from born to the death, it's a natural phenomenon. It is a part of life cycle. So dhareti iti deha and shireta iti shariram. Catabolism is equal to anabolism and catabolism plus metabolism. So chay apachay, it's a natural phenomenon. So what we need, the nourishment, proper nourishment, and the definition of the health according to the World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social and well-being. So it is a first part and not merely absence of disease or infirmity. So I would like to include here financial also. Financial fitness factor is a need of our, and it's very important to maintain the health status. So healthy lifestyle, constructive thought process and destructive thought process. Vikaro dhatu vaishamyam samya prakriti uchyate sukh sadnakam arogya vikaro dukkham evacho. So yogic and Ayurvedic ancient science, that is a happiness index, it should be keep positively vibes in our daily routine. So it's also because just a week, I would like to say Chaya Prokopa Prasara Sana Sonshaya Vyakti Veda. So Chaya Prokopa Prasara, not Prasara, Chaya Prokop and Prasham. So this is a tool and it will implement by proper techniques through lifestyle, sedentary lifestyle, modern lifestyle, modification, Haribari curries, physical level, non-communicable disease, hypertension, obesity, acid peptide disorder, allergic conditions, endocrine disorder, hormonal disorders, menopausal, etc. At mental level, depression, anxiety, neurosis, restlessness, insomnia, sleeplessness, insecure feeling, or loneliness. So this is a calendar at individual level and at social level. Enjoyment at geriatric stage also. Graduation after completion of the responsibilities in the geriatric phase, graduation, job, marriage, family responsibility, settlement, financial stability, and at social level, enjoyment, wine and dine cultures, competitions, asset liabilities. So control on the specific that addiction, that is also important measures to prevent the geriatric complications. The real story of life is in the early stage, we have time. In the middle stage, we have no time, and at the geriatric stage, we have time. But at early stage, we have no money. Middle stage, we have money, and geriatric stage also money. Depends upon the financial situation. And in the early stage, energy is also there. By middle stage, energy is also there. But at geriatric stage, no energy. So we have to focus on this particular phenomenon also, characteristic also. Geriatric stage, natural cycle or disease. External equilibrium means Purushasya Lokilyatam Siddhanta, Yavanta Loke Murtimanta Bhavis Tavanta Purusha, Yavanta Purusha, Tavanta Loke. So depends upon the season, day, night, biological clock, Prakriti, age factor, dietetic regimen. So it is a very important part when we are considering the preventive or immunomodulator measures when treating this kind of stage. Just respected Arpan Bhatt said, given the World Sleep Day example and the sleep survey, so Ahar Nidra and Brahmacharya, geriatric care, it is very important. Nidra ektam sukham dukham pushti kasya bala kulam rushyata klibata jnanam ajnanam jivitanam cha. So Nidra factor in this stage is very important to maintain the psychosomatic stability. Ahar, according to the body constitution, Prakriti Vichar, and Agni Jaran Shaktya Pariksheta. So Jirna, Ajirna, Parikshena, it is very important. And Vaivahik Brahmacharya. Of course, no part at this stage, Ojastu, Tejodhatunam, Shukrantanam, Paransurtam. So what were the Shukram Balam Rakshayata? So we have to focus on that part also. A holistic health model for geriatric care, application of SWOT principle in various geriatric health dimension, Ayurveda, Yoga naturopathy, Unani Siddha, homeopathy also. So we can't ignore that particular science specific golden tool. So geriatric immunization, just like Suvarna Prasham. So it's possible. Geriatric immunization, childhood phase, vaccination and immunization, geriatric phase, immunization is also possible at physical, mental, social, and spiritual level. At this stage, insecure feeling of phobia due to the nuclear family, that is one of the reasons.
because at this stage, moral support, mental support, emotional support very required to the geriatric, and acceptations are also increased. But due to the hurry culture, and family members also have no time, and they are giving so much, means there are many times miscommunication happens. Why they are ignoring us? What is the exactly problem? We have done too much for all the our peoples or kids or son or daughters, but how they are treating me now at this stage? So there are a lot of factors. So geriatric phase immunization is very important. Uh, just like this plant cultivation require the water, sunlight, oxygen, same our geriatric stage, human body constitution, gut constitution, and psychosomatic constitution. We have to focus when we are treating the patient. Immunity through dhatu पोषण. So रस धातु धातु आहार, रस धातु पोषण, रस रक्त, मांस मेद, अस्थि मज्जा, and shukra. So this is the form and how the water at the end of the farm field also that is reaching. So just like that, in geriatric stage, Agni, Sapta Dhatu Agni, Panchabhotik Agni, and Jathar Agni, because Jathara Bhagwan Agni Ishwarasya Anna Pachaka. So what we are doing the diet in the form of spices, haldi, turmeric, jeera, dhania, lasuna recommended in cooking. Kitchen is the primary pharmacy. Spices are the best medicine. It can act as a medicine to create infection when used in right quality and quantity in daily cooking. So it's very important. In our hospital, Arogya Shala Rugnalaya Nasik, our hospital staff, they are serving the kadha to the each and every staff, so that they can maintain the immunity. So it is very important also. And yogic lifestyle means Ayurvedic lifestyle for immunity, and for immunity, yogic lifestyle is very important. Just like golden tools, Nasya, nasal oleation, gargling, cooling of oil, Abhyanga, Udvartan, Padabhyanga, umbilical oleation, Karnapuran. Just focusing, keep in mind various different conditions in the geriatric phase. For example, Parkinson disease, Myasthenia gravis, or Kampavata, Vata Vyadhi, arthritis, Alzheimer. So we had to treat the depression, anxiety neurosis, affective disorder, chronic constipation. So a lot of there are diseases, conditions. Diabetic also is very common. Mortality rate is high. Hypertension is also very common. So this is the Ministry of Ayush guidelines, Ayushman Bharat traditional food recipes from Ayush system of medicine. I would like to request all the experts here. They will guide us, means the younger generation, how to module the design for the same geriatric hotel, specifically only Ayurvedic geriatric hotel, Ayurvedic pediatric hotel, Ayurvedic ANC hotel, Ayurvedic PNC hotel. So master chef, hotel management, just we would like to give a particular suggestions to the master chef. They will prepare the recipes because they are expert in their field, and their presentation is very important also. So this we can achieve the goal, means swasthya rakshanam aturasya vikar prashanam cha. And mental health through swasthya rutta, relaxation technique, deep breathing exercise, hatayog application, mental level, art of living, swasthya rutta in Ayurveda, Yog Nidra, communication and interaction. This is very important. This is a lacuna nowadays. Communication and interactions, financial stability planning, outing at various holistic and hill stations. So health promotion principle, disease prevention principle, comorbidity health issues management, and emotional and spiritual health care. It's a need of our. I am very thankful to take home message. Ayurvedic and yogic lifestyle is a need of time now onward future. Worldwide globalization are now getting to our initiate Indian science. It is our Indian responsibility to follow Ayush and yogic lifestyle in our day-to-day practices. Ayush and yogic geriatric healthcare center. It's a need of time. So one can launch the geriatric health center Ayurveda, just like Arogya Vardhini. Ayushman scholarship scheme is also there now. Minister of Ayush is implementing various schemes nowadays, and it's very truly we can say Rajashray nowadays to the Ayurvedic research worker, Ayurvedic academician, Ayurvedic clinical practitioner, and who are working in the Ayurveda sector. So we have a golden future also. And lastly, I am very thankful to the references I have taken from the Ayurvedic literature, Suddhatraya, Laghutraya, and somewhat the Google images. I am very thankful to respected Agnihotri sir, respected Pawan sir, all the stalwart here present. I am very, I express my gratitude for the same. Thank you very much, sir.
थैंक यू डॉक्टर कमलेश महाजन जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा. टू थिंग्स और टू points you touched, which probably not been touched by earlier. Of course, they are all knowing about this. The one is Swarnaprashan. You can put it in the category of primary preventive measures, and the other one is geriatric care. We used to celebrate geriatric care topic in our webinars times and again. You please note down. I will also note down. I will invite you. We have got 3-4 days at least for the geriatric care and their responsibilities, and the responsibilities of youngsters for the old age persons. So there we will be having a good discussion and good presentation, having this topic directly related to our Swasthvrat and Sadvrat. Thank you so much for your presentation. And now I would like to invite Dr. Tejinder Singh. He is pursuing his post-graduation MD here in Tranchal College, Tranchal Ayurvedic College, in the Swasthvrat and Yoga department. And he is a very, means staunch, I should say, a very dynamic and very laborious at the same time, very committed person, having a good approach. His enthusiasm is to be more and more present and be a participant in such type of national and international webinars, seminars, conferences. A good presentation is expected from him. So I invite to this platform Dr. Tejinder Singh. You please proceed with your presentation. Namaskar. Dr. Tejinder Singh. You are online? Yes, you are getting ready. You will start speaking. 3, 4, and 5. Namaskar. Namaskar. Very good evening to all the respected dignitaries and my teachers. My name is Dr. Tejendra Singh. I'm MD Scholar, Department of Social. Today I'm presenting my topic on secondary preventive measures. Already respected teachers and previous speakers elaborated like all the topics regarding the secondary preventive measures. I'll just say my topics. I will discuss basic things regarding Dinacharya and other things how we can make as a preventive measures. Aims of Ayurveda. In Ayurveda, there are like two aims of Ayurveda. Swastharakshanam Aturasya Vikar Prashanam Cha. The first one is prevention of disease and maintenance of health, and the second is curing the disease. So now we are focusing on mainly on the prevention of the disease. So just like there's a proverb that's very famous, like, prevention is better than cure. Okay, nowadays everyone is focusing on the prevention part. If someone having any issues, diseases, so it's better in healthy state or like in normal state, they can make a prevention measures to prevent from the illnesses, prevent from the diseases. So these are the important few regimens, daily regimes we call Dinacharya in Ayurveda. So Dinacharya, the appropriate daily regimes which should be followed the Ayurveda way for a physical, mental, and spiritually healthy life. Dinacharya means right from waking up in the morning till sleeping at night. All the daily routines have been given utmost importance in Ayurveda. When someone came to us like कोई patient हमारे पास आता है as in OPDs, so first we ask about their Dinacharya. That's the root cause. Like we can suggest them about the what they can avoid in their daily routine, what they can add in their daily routine. Even instead of giving the medications, instead of giving some kind of treatment protocol, first we focus on the root cause कि किस चीज से उनको issues हो रहे हैं. That's why Dincharya's is very important to our daily routine. There's a well-known proverb: early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise. So according to Ayurveda, there's a recommendation Brahma Muhurta. So everyone should wake up at the time of Brahma Muhurta. It means 1 or 2 or 1.5 hours before sunrise. Brahma means knowledge. That time
the energy level, and the spirituality, and we can uplift our spiritual knowledge that time. We can enhance, we can do our work in that better way. Now about the second part is the evacuate your bowel movements. You can train yourself to this as particular time. We recommend to drink lukewarm water in the morning. Avoid answering the nature's calls. Do not avoid. We have to avoid. Sometimes people used to have to habit of doing other stuff, checking the mails and all, but they are not like doing these things. And these recommendations also do not strain to. There's a non-normal natural urge. Just drink lukewarm water, either some herbal drink. Then after that, there is a danta dhavana. It means brushing. In Ayurveda, there's a recommendations of few things like two times recommendation, just like nowadays dentists recommend in the morning and after eating food. And about the brushing, there are few plants they are recommended in Ayurveda: Arka, Vat, Khadir, Karanj, Arjuna, and Nimba. Nimba is best among bitter herbs. That's why nowadays in a lot of toothpaste वो कहते हैं कि their toothpaste contains salt and neem. These are the toothbrush tweak. Benefit of brushing tooth, like it alleviates kapha, it removes the coating on teeth, it also freshens the mouth, makes up feel pleasant. That later on tongue cleaning. Jivanilikan, there's a recommendations after brushing Jivanilikan. What it does, it also clean our tongue and also give our sense of the freshness. It also helps to remove the coating of the ama, that's called toxins. Gargling, nowadays is very common. Gandusha kaval, everyone is like hurting about the oil pulling and all. So it gives the refreshment in the morning, and also gives the nourishing to our teeth and gums, and also cleans the coating of our tongues. So we can use uh, different kind of oils. Basically sesame and coconut oil are the common one, and we recommend also arimidai. Someone having the some other issues, mouth related issues, bad breath and all, so we recommend arimidai also. Benefits of gargling and gandus. Then mouthwash cover. Then next part is anjanam. It means like uh, applying the collyrium to the eyes to protect from various eye diseases. Two types of anjanam are there: the sour anjanam and rasanjanam. The one is like we can use daily basis, one is we can use the particular time. The benefits of collyrium: it cleanses the eye, improves vision, and generates a shine and twinkle in the eyes. When to apply this kind of collyrium, anjan and kajal? Whenever there are a few things, when someone is crying, anger, fear, redness and pain in eyes. The now is the another one is dhumpana, and because today is like uh, we are focusing on the about the how we can quit the smoking, and we can recommend someone to Ayurvedic dhumpan, and it's also recommended for few other health issues. It also helps in the hoarseness of voices, rhinitis and neck stiffness, someone having dyspnea, strengthening the teeth, and also the lot of benefits. We also recommend after few pancharma procedures. And there are a few timings when we recommend medicated smoke: after bathing, after eating, after sneezing, after brushing teeth, after applying corium, and after sleep. The next one is nashyam, nasal drops. Nashyam means administration of medicated oil or ghee through the nostrils. And Ayurveda, there is uh, about the nashyam. It's like about the nostrils. The nasa is sirsodwara. It means our nostrils are the doors to the brain. So whatever we are applying, it also nourish our brain, our mind, and our senses. So basically, we generally use anutelam and also other kind of oils like coconut oil, sadbindu telam. We also use those things in a lot of neurological issues for nourishing purpose also. Whenever we do nashyam, what we feels like a lightness of head, sound sleep, cure of diseases, pleasant mind, and clarity of proper functioning of sense organs. Now, second part is exercise, vyayama. Nowadays, everyone is doing lot of gym, lot of yoga and all, but we are not aware about like how much we have to do.
That means we have to know that our strength is not like up to the gym trainer and other, someone is pushing us, or we are comparing to other our colleagues. So it's better we have to just check our strength, and according to that we have to do the exercise and all. These are the signs for appropriate exercising. Someone is sweating, increased respiration rate, lightness of the body, increased heart rate. The benefits of exercise: it nourishes the body, gives good complexion, enhance the digestive power. It's also good for like making good appetite, prevents laziness, detoxify the body. Some rules for regarding the exercise in Ayurveda: heavy exercise should be done in the winter and spring season, mild exercise during the remaining seasons. Walking daily increases the lifespan, strength, and intelligence. Walking improves digestion and health of indriyas or sense organs. Next is Abhyanga, which is very common nowadays. Earlier, people used to do by themselves on daily basis, and of course, it's like a part of daily regime. But nowadays, people are going to the therapy centers and massage centers for having the massage, for making them relax. It's not about only the body relaxation; it's about the mental relaxation also. And with Ayurveda oils in Western countries, they use aroma oils and the dry massages. But along with the Ayurveda oil, they also nourish the body. They also the nourishment, relaxation, and also if there is any issues, skin issues or some painful issues, they also help in those things. These are the positions for Abhyanga, how we can do like a kind of protocol for Abhyanga. Benefits of the massage is Abhyanga: delays aging process, relieves fatigue and relaxes the body, improves skin complexion, strengthens the body, improves sleep. Padabhyanga is very common nowadays. In Ayurveda, there is a uh, description about the Padabhyanga. If someone having daily Padabhyanga, he or she can sleep very properly, because in our soul there are a lot of marma points which after pressing which initiate sound sleep. So nowadays foot massager is available online and people are using this ritual. Daily foot massage benefits: reduces dryness of the body, gives strength and stability, improves health of eyes. इसको चक्षुष्य भी बोला गया, like it also increase the eye power and also helps in other issues also. Sirobhanga, head massage should be done daily. Benefit of head massage: prevents hair fall, strength hair roots, also give this nourishment to the sense organs. Now Udvartana, about the dry powder massage. Udvartana is recommended after oil massage. It helps to eliminate aggravated kapha and also helps to excess body fat, dilates blood vessels and prevents rashes and itching. Benefits of daily bath: snan. It's like it's recommended like it's balyavardhak. It increases oja, strength of the heart. It relaxes the body. Washing feet cleans the foot. It also helps in preventing the other disorders. Other daily regimes are like wearing comfortable clothes. It's mainly about the hygiene. If you're wearing good clothes, not about the costly, it's about the डॉक्टर hygienic. तेजिंदर थोड़ा 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 ब्रीफ करो कि Sure, अगला sure. भी आना है. Sure. Wearing garlands about the fragrance and all, wearing comfortable shoes to protect from the diseases, wearing head turban to protect from the especially from the sun, wind and rain. Ahara and Nidra, like in Ayurveda, Tripastamba, Ahara and Nidra is the very important. And conclusion is unhealthy lifestyles are a principal cause of modern day illnesses. And recognize the importance of years of life. This well-being or wellness associated with social, mental, spiritual, and physical functioning. It is possible only by these therapies. These therapies means like a following dincharya, daily regimens. So health management is free and enjoyable, but disease management is costly and painful. So everyone should follow the dincharya. Lastly, I will conclude my topic: eat healthy, be healthy, and feel healthy. Thank you. Thank you so much, Dr. Agnuti sir, for giving me guidance and as a mentor. Thank you, Professor Pawan Sharma sir, for providing such a great platform. And previous speaker, Professor Arpan sir and Professor Reddy sir, Dr. Kamlesh sir, and Dr. Satpati. Thank you so much, sir. थैंक यू डॉक्टर तेजिंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा आपका. इतना लेट आपने हमको साथ दिया, 11:45 rather. Moreover, this is a pleasure that all the earlier speakers, the stalwarts of our Sanskrit department as such, they talked about a lot about the
principal side of the whole theme regarding the secondary or primary or primarily measures, and you shown the light for the measures itself, how it can be achieved with the help of the daily regime or night regime, etc. So these are the steps which are to be observed properly, of course, by the even pregnant lady, the babies, the youngsters, and the persons of any age group, according to their body stamina, according to their age, weight, and the dietary requirements. This is what the basic theme is. We were talking, teaching in the same manner. Now the clever persons has given the new word simply, otherwise nothing doing. This is the same thing. So I congratulate you, being the youngermost person, presented your paper today with the presence of the greatest persons. I think the living legends of our Sanskrit department. Our person is very much there to bless you, to give you Ashirwad. And this is our pleasure that you are still with us. I think with your presentation, the invitees presentation is over. So it makes me to go for the open discussion for only 5 minutes, because the next webinar is due, and our Adharani